गो। नमस्कार, स्वराज अभियान के एक और हैंगआउट पर आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ स्वराज अभियान के नेशनल कन्वीनर प्रोफेसर आनंद कुमार हैं। This hangout is about the journey of Swaraj Abhiyan during its first 6 months and the way forward. This is going to be a bilingual hangout और हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रश्नोत्तर करेंगे। आज हम प्रोफेसर आनंद कुमार से जानना चाहेंगे कि पिछले 6 महीने में स्वराज अभियान के एक संगठन के रूप में किस तरह से उभर कर आया है और स्वराज अभियान की क्या-क्या गतिविधियां और उपलब्धियां रही है। We would like to hear from Professor Anand Kumar on the organizational development of Swaraj Abhiyan and the last 6 months and the different endeavors taken by the Swaraj Abhiyan. Thereafter, we will be taking up questions we have received on various platforms. In the end, we will request Professor Anand Kumar to brief us on the way forward of Swaraj Abhiyan. So I invite Professor Anand Kumar to give us a foreword and then we'll start with questions. Over to you, Professor Anand Kumar. Thank you, Falguni ji. It's a moment of immense pleasure for me to be face to face through this unique machine with friends all over to share a brief report about our journey towards alternative politics in the last 6 months. I'll be very happy to take questions as some of them have already landed with help of Falguni ji, Neeraj ji and other planners, Avinash ji. आज से 6 महीने पहले देश में एक बहुत बड़ा प्रयोग अपनी मौत के कगार पर पहुंच गया था, क्योंकि जिन लोगों ने देश को बनाने के लिए वैकल्पिक राजनीति का रास्ता बनाने का वादा किया था, वो चुनाव जीतने के चक्कर में और कुर्सियों पर बैठने की उमंग में तरह तरह के समझौतों के शिकार हुए। इसी माहौल में कुछ लोगों को सिद्धांतों की याद दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी से निकाला गया। 15 दिन के अंदर 14 अप्रैल को गुड़गांव में दिल्ली की सरहदों पर देश भर से लोग इकट्ठा हुए। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और हम इसमें से आगे कैसे बढ़ें। साथियों, हमने 14 अप्रैल 2015 को ये तय किया कि अगले 6 महीने में देश भर में हम संवादों का आयोजन करेंगे और हमने आपस में ये सिद्धांत स्वीकार किया कि हमारी राय आगे के रास्ते के बारे में देश भर की राय के साथ ही बनेगी। We decided to go forward beyond the tragic circumstances of near collapse of the great experiment of alternative politics which had emerged as Aam Aadmi Party. Due to so-called winnability and pragmatism for power, principles were thrown out of the windows, and it was declared that we want to have power come what may, and that created a situation of expulsion of some of the founders who were not willing to compromise for the sake of a handful of seats in Assembly of Delhi. Since then, we had promised that we'll go around the country in next 6 months and create an atmosphere of dialogue to decide our next step. You'll be very happy to know that since April 2015, we have organized 23 state-level dialogues. In larger states, we organize more than one, like in Uttar Pradesh. And on an average, we had a few hours to 2 days or 3 days conventions, and this resulted into formation of state campaign committees. So now we have completed the first round of going around the country, and it happened that from Andhra to Assam and from Kashmir to Kerala, these consultations have been welcomed by the campaigners for a better India, campaigners for corruption-free India, campaigners for alternative politics. Apart from this round of dialogues, we also identified 4 questions to be addressed with priority and with energy and positivity. The first question was about the land acquisition bill which was proposed by Shri Narendra Modi government to give authority to bureaucracy and corporates to take away land of the peasants
without due consultation or consideration. We are very happy to report to you that we reached out to 10,000 villages plus. We collected soil from their fields. We gathered men and women from Kerala to Kashmir, particularly from Maharashtra, Andhra, Telangana, Karnataka, Rajasthan, Madhya Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh, Odisha, Haryana, and Punjab, the most affected agrarian provinces of our country. Luckily for the peasants and good for us that the government of India lost courage to be so brazen about the essential resources of our peasants. उन्होंने वो बिल वापस लेने का फैसला किया, लेकिन हमारी रैली में जो किसान पहुंचे उस रैली के साथ बुरा बर्ताव हुआ। 100 के लगभग हमारे साथियों को प्रोफेसर योगेंद्र यादव के साथ सारी रात दिल्ली पुलिस ने संसद भवन के थाने की हवालात में बंद रखा। हाई कोर्ट की अपील करने पर उनको छोड़ा गया। साथियों, जय किसान आंदोलन आज स्वराज अभियान की पहल से बना एक राष्ट्रीय मंच हो चुका है, जिसने देश के 40 से ज्यादा किसान संगठनों को जोड़ने में सफलता पाई। दूसरा, हमने ये देखा कि देश की शिक्षा बहुत बुरी हालत में है। एक तरफ नौकरशाही और दूसरी तरफ मुनाफा कमाने की वासना या इच्छा। We saw that educational front is also facing a lot of challenges. On the one hand, the traditional pressure of bureaucratization because of the government funding, and the new pressure of profit-making entrepreneurs, crony capitalists through commercialization of education. And we created a network to organize a national consultation of youth and educationists, which took place on the 3rd of November. The whole Mavalankar Hall was busy with dialogue among 1,000 plus participants, and we are now on our way to engage with the country about the educational crisis which affects from KG, kindergarten to PG, postgraduate studies. इसके लिए जो देश भर के विद्यार्थी और शिक्षाविद आगे आए हैं, यह भी स्वराज अभियान की दूसरी बड़ी सफलता है। और एक तरफ गांव के जमीन का सवाल, भूमि नीति का सवाल, और दूसरी तरफ शिक्षा नीति का सवाल और शिक्षा के खर्चे का सवाल। साथियों, एक तीसरा सवाल इस बीच में सारे देश में एकदम से धुंध की तरह फैल गया है, धुएं की तरह फैल गया है, और वो है देश भर में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता और खाने कपड़े से लेकर के आस्था के सवालों पर हस्तक्षेप। इस भीड़ राज को रोकने के लिए अमन कमेटी बनाने का फैसला हमने किया, और इसमें हमारी शुरुआत हरियाणा के वल्लभगढ़ में अटाली गांव की मस्जिद के सवाल से शुरू हुई, और वहां से लेकर के उत्तर प्रदेश की दादरी में अफवाहों के जरिए एक निर्दोष पड़ोसी को मारने के लिए इकट्ठा भीड़ और अखलाक साहब की मौत, इसने देश को हिला दिया है। सारे देश में स्वराज अभियान के साथी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सक्रिय हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुआ, जहां पर कर्फ्यू तक लगाने की नौबत आ गई थी, लेकिन बनारस में स्वराज अभियान के साथियों ने गली मोहल्लों में पर्चे बांट करके, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करके, अमन कमेटियां बना करके हालात को बदलने में बेमिसाल योगदान किया है। एक चौथा मुद्दा जिसको अब हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, वो आरटीआई और पीआईएल के काम के जरिए देश के भ्रष्टाचार का मुकाबला कर रहे सतर्क नागरिकों की रक्षा और मदद का है। विसल ब्लोअर्स के बारे में देश भर में एक चिंता है, क्योंकि 80 से ज्यादा लोग भ्रष्टाचार से लड़ते हुए आरटीआई करने के कारण, पीआईएल करने के कारण, विसल ब्लोअर होने के कारण मारे गए हैं। और इसको हमने श्री प्रशांत भूषण की अगुवाई में एक नेशनल एंटी करप्शन फोरम बनाने का फैसला किया है, और इसके लिए देश भर के जिले से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक के वकीलों का एक ताना बाना बन रहा है, जिससे कि हम लीगल काउंसलिंग से लेकर के आरटीआई ट्रेनिंग तक का काम कर सकें। रोज रोज की जिंदगी की जो जरूरतें हैं, इसके लिए स्वराज अभियान ने यह तय किया कि हम जिले से लेकर के पंचायत और वार्ड स्तर पर स्वराज केंद्र खोलेंगे। शुरुआती स्वराज केंद्र दिल्ली में खोले जा चुके हैं, कई राज्यों में इसकी पहल हो गई है। स्वराज केंद्र का अर्थ होगा कि हम रोज रोज की जिंदगी से जूझ रहे आदमी औरत को आधार कार्ड
और राशन कार्ड बनवाने से लेकर के अस्पताल और विद्यालय और न्यायालय में जो समस्याएं हैं उसमें उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, उनके काउंसलर बने, उनके रिसोर्स पर्सन बने। इसके अलावा स्वराज केंद्र को हम स्थानीय स्तर पर नेतृत्व निर्माण यानी लीडरशिप बिल्डिंग का एक सेंटर बनाना चाहते हैं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन का सेंटर बनाना चाहते हैं, एक माइक्रो डेमोक्रेसी की यूनिट बनाना चाहते हैं। मित्रों, इस बीच में हमने एक तरफ राष्ट्रीय पैमाने पर 4 प्रश्नों से जूझने का फैसला किया और कुछ कदम बढ़ाए हैं। किसान और जमीन का सवाल, शिक्षा और नौजवानों के रोजगार का सवाल, अमन और सांप्रदायिक और जातीय हिंसा को रोकने की चुनौती और भ्रष्टाचार से लड़ रहे लोगों का ताना बाना बनाने का एक राष्ट्रीय कर्तव्य और स्थानीय स्तर पर स्वराज केंद्र। दिस हैज बीन आवर जर्नी सो फार। अब तक हमारे पास लगभग 30,000 लोगों के संपर्क सूत्र बने हैं देश और विदेश के। हम बीच बीच में आप सबके पास हैंगआउट के जरिए प्रोफेसर योगेंद्र यादव, श्री प्रशांत भूषण और इस तरह के अन्य अगली कतार में चल रहे साथियों से संवाद कराते रहे हैं। आज भी ये संवाद इसी तरह की एक कोशिश है। अभी मैं यहीं पर अपनी बात रोकता हूं, जिससे कि जो इस बीच में मन में आपकी जिज्ञासा आई है उसके बारे में कुछ बातचीत की जा सके। I stop here by underlining that we have opened 4 fronts on the land and rural question with Jai Kisan Andolan led by Professor Yogendra Yadav, on the front of communal harmony and social togetherness cooperation against caste and religion based violence with help of Sri Adil Mohammed, Ramzan Ali, Prashant Bhushan and several others, coordinating the campaigns for a better education system, and that has been initiated by Dr. Umesh Singh and many others, and we had a big conference in Delhi just last week on 3rd of November. And fourth, creating a network of resource persons for RTI, PIL activists and whistleblowers at the micro level for day-to-day well-being of ordinary men and women. We have started establishment of Swaraj Kendras. They are the unit of micro power for micro democracy, for good governance, for alternative politics. So I want to stop here so that we can get into a dialogue on the basis of questions which are there in your mind through your engagements and some of the concerns and advices which you may have for us for way forward. Thank you. Thank you very much, Anand Kumar ji. I think it was a very, very good elaborate brief of what is the undertakings of Swaraj Abhiyan. इस डायरेक्शन में निशान दिल्ली से पूछते हैं कि हमने जो 6 महीने में स्वराज अभियान ने जो भी अंडरटेकिंग्स ली थी, इसका सफलता का आकलन आप कैसे करेंगे? देखिए, किसी भी नए संगठन की सफलता के लिए निशान जी 3 पैमाना होता है। नंबर 1 कि जिन लोगों ने ये यात्रा शुरू की है, संगठन शुरू किया है, उनमें आपस में एकता बढ़ी है या बिखरा हुआ है? Are they still together, the prime movers, or they have started developing ego clashes, going their ways, resigning, quitting? और इस पैमाने पर स्वराज अभियान को आप 100 में 99 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि हमने जिनको भी जोड़ा, जो हमारे साथ खड़े हुए गुड़गांव में 14 अप्रैल को, उनमें से जो लोग हमारी राष्ट्रीय संचालन समिति में आए 159 लोग और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आए 29 लोग, सब एक साथ चल रहे हैं, कुछ ज्यादा तेज रफ्तार से, कुछ कम तेज रफ्तार से, लेकिन यूनिटी इज डीप इन नाउ। दूसरा पैमाना होता है कि ये फैले या अपने कुएं में बैठे हुए हैं। आर दे एक्सपैंडिंग, ग्रोइंग, और दे आर कन्फाइंड टू सेलेक्ट फ्यू? इस पैमाने पर हमने 4,500 लोगों से यात्रा शुरू की थी। आज हमारा नेटवर्क 30,000 लोगों के साथ जुड़ गया है, और इसमें हमने अभी मास रिक्रूटमेंट नहीं किया है। हम आहिस्ता आहिस्ता चले हैं, क्योंकि हमको याद है कि जब हमने आम आदमी पार्टी के लिए तथाकथित 1 करोड़ लोगों को नुक्कड़ों से इकट्ठा किया था, मोबाइल से इकट्ठा किया था, तो फिर वो 1 करोड़ जाने कहां चले गए? क्योंकि चुनाव में हमको कुल वोट 1 करोड़ ही मिला, यानी उसमें कोई मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं आया था।
तीसरा हमारा पैमाना होता है कि हम खाली संगठन हैं या हम जनता के साथ जुड़ने वाले आंदोलन भी बन रहे हैं। और आपको जान के खुशी होगी, आपको याद होगा, आप तो दिल्ली के हैं, कि दिल्ली में कई संगठनों ने, अन्ना हजारे जी से लेकर के कम्युनिस्ट पार्टियों तक ने किसानों की जमीन के सवाल पर रैलियां की थी। स्वराज अभियान की रैली में सबसे ज्यादा संख्या में लोग आए और ये हमारे लिए बड़े संतोष की बात है। एक नन्हा सा संगठन जिसके पास साधन नहीं, मीडिया में जिसकी पहचान नहीं, हमारा जिलों से ताना बाना कमजोर, और फिर भी इतने सारे लोग आए क्योंकि हमने किसानों के बीच जाकर के काम किया और वो हमारे आवाज पर दिल्ली तक पहुंचे। शिक्षा के सवाल पर भी जो शुरुआत हमने की है, लगभग 1100 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 600 विद्यार्थी थे और देश के कई केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालयों के छात्र संगठनों से जुड़े लोग आए। इसी तरह से आपको ये देख करके अच्छा लगेगा कि इस समय देश में चारों तरफ से, यानी अब तक पिछले 6 महीने में स्वराज अभियान के जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे जैसे कार्यकर्ता, प्रोफेसर योगेंद्र यादव, श्री प्रशांत भूषण, डॉक्टर अजीत झा, फहीम खान, आदिल मोहम्मद, शालिनी, समन कुरैशी, इस तरह के लोगों ने अब तक लगभग 300 छोटी बड़ी सभाओं का संबोधन भी किया है। तो आप कह सकते हैं कि स्वराज अभियान 14 अप्रैल को एक विचार था, अब एक वो वास्तविकता की तरफ बढ़ रहा है। थैंक यू आनंद जी। इसी डायरेक्शन में थोड़ा आगे चलते हुए संजय भट्ट देहरादून से पूछ रहे हैं कि जैसे आपने ब्रीफ किया कि आंदोलन, किसान आंदोलन हुआ, शिक्षा स्वराज हुआ, इन सब को आप राजनीति से कैसे जोड़कर कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, और इन दोनों आंदोलनों से क्या अलग कदम क्या हो सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ये राजनीति की परिभाषा से जुड़ा हुआ है। राजनीति के 2 मायने हैं संजय जी। एक तो है कुर्सी की तलाश, सत्ता के लिए शतरंज, और दूसरा है राष्ट्र निर्माण और मानवता निर्माण की दिशा में योगदान। Politics is defined in many ways. One of the very common understanding of politics is pursuit of power by all means. And the other one, the larger, more inclusive definition of politics is science and art of nation building and humanizing the society and its power structures. We have moved in the second realm very successfully, क्योंकि हमने, जैसा आपने खुद ही कहा, कि किसानों के सवाल पर और अब शिक्षा के सवाल पर लोगों की आवाज में आवाज मिलाने के लिए मंच बनाने में सफलता पाई है। अब हमको वैकल्पिक राजनीति के लिए जो राजनीति के मुख्य आयाम हैं, आंदोलन, मुद्दों को लेकर के जन जागरण, चुनाव में हस्तक्षेप और सत्ता को काबू में लाना, इन चारों के लिए, यानी जन जागरण, जन आंदोलन, चुनाव और सरकारों को जनता की लगाम में लाना, इसमें हमको पहला कदम तो हमने किया जन जागरण का। आंदोलन किसान के सवाल पर हुआ, शिक्षा के सवाल पर शुरू करना है। लेकिन चुनाव में अभी हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि चुनाव के लिए जो जरूरी शर्त होती है कि जमीन पर आपका संगठन हो, लोगों के बीच में कुछ मुद्दों के साथ आपकी पहचान हो और जनता में आपके चुनाव लड़ने की आवाज हो, मांग हो, वो अभी नहीं हुआ है। हम उधर बढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू आनंद जी। रोशन कुमार बदरपुर दिल्ली से ही पूछना चाह रहे हैं कि स्वराज अभियान के तहत हम किन किन मुद्दों पर काम कर सकते हैं और स्वराज अभियान का स्थानीय और राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है। आपने थोड़ा सा इस मुद्दे पे टच किया है, यदि आप कुछ पॉइंट्स इलाबोरेट कर सके कि स्थानीय और राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है और कैसे किन किन मुद्दों पर लोग काम कर सकते हैं स्वराज अभियान के साथ। देखिए, स्वराज का जो अर्थ है वो है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और निजी जिंदगी में हम किसी के दबाव में, किसी के अन्याय में और किसी की दबंगई में जीने को मजबूर न हो, और हमारे जो वाजिब जरूरतें हैं उसको और जो हमारे बुनियादी अधिकार हैं उनका पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का भी पालन करने की आजादी महसूस करें और उसको जिएं। इस क्रम में स्थानीय स्तर पर हमें जो प्रशासन है और जो सामाजिक व्यवस्था है, दोनों में
स्वराज की जो छवि है, स्वराज की जो रोशनी है, उसको फैलाना है। यानी शासन जनता के अनुकूल हो, जनता पर शासन नहीं हो, जनता का शासन हो। तो पानी, बिजली, सफाई, सुरक्षा, इसके लिए जो स्थानीय व्यवस्थाएं हैं, जिनके लिए हमारा टैक्स लेके सरकार इंतजाम करती है, करने का दावा करती है, वो ठीक से हो, इसकी निगरानी करें, इसमें हम योगदान करें, नागरिकों की तरफ से रचनात्मक पहल भी करें। राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें कि जो स्वराज हमको पुरखों से मिला, वो बढ़ रहा है या घट रहा है? आज ऐसा लगता है कि वो स्वराज घट रहा है। रोजगार नहीं दिखाई पड़ रहा है, महंगाई की कोई सीमा नहीं है, सांप्रदायिकता और जातीयता को लेकर के लोगों की जान लेने में भी लोगों को संकोच नहीं हो रहा, भीड़ का राज हो रहा है। इसमें हमको हस्तक्षेप करना है। और इसमें हमने जो आपको जिक्र किया कि किसानों के स्वराज पर हो रहे हमले पर तो हम सफल हुए हैं, वो बिल अब सरकार नहीं लाने की हिम्मत कर रही है। शिक्षा का स्वराज भी हमको आगे बढ़ाना है। इसी तरह से आस्था और विश्वास का स्वराज और भ्रष्टाचार से की गुलामी से मुक्ति का स्वराज, इसकी तरफ भी हमको बढ़ना है। तो स्थानीय स्तर पर स्वराज केंद्र बनाइए और राष्ट्रीय स्तर पर गांव के सवाल, शिक्षा और रोजगार के सवाल, सांप्रदायिक और जातीय सद्भाव के सवाल और भ्रष्टाचार से लड़ने की कोशिश कर रहे लोगों की ताकत बढ़ाने की जिम्मेदारी, इसकी तरफ हमको बढ़ना चाहिए। थैंक यू आनंद जी। इस डायरेक्शन में एक पेचीदा सवाल है जो कई युवा के मन में भी होता होगा, और श्वेता जी रूपारेल आनंद से पूछ रही है कि oftentimes working for social causes and witnessing these pain and sorrow of other people is very painful and depressing. How would you think the youth should be handling it while working together with us on these issues? Shweta ji, is a very serious challenge where sympathizing and empathizing with somebody in pain makes you feel the pain itself. But the difference is that one is a victim and the other is trying to attack that victimhood by helping the person to collect herself or himself, add resources, and create a relief or create betterment. I think that depression has to be appreciated, it has to be recognized. There is no point in living in denial about the feeling of pain and the feeling of fatigue which comes while you are helping somebody who is in a situation of victimhood. But on the other hand, you have to also see that a smile on a crying face, instead of tears, if there is light in the eyes, then you are making it different. Making the difference is our challenge, and you have to see even the tiniest difference is a great difference because you are turning the tide, you are swimming against the current. I think that we have to be collecting ourselves through selfless engagement with people in pain and be confident that you are doing the right thing, and that in itself is a great consolation. It's like serving a person who is suffering with a critical disease. You know that you are not the doctor, you know that you are not the patient, but you know that you are in between the patient and the pain, and lending a helping hand and a voice and your own little resources is in itself a source of joy because you are helping a person in need. A friend in need is a friend indeed. And you are at least increasing the circuit of your friendship. You are cultivating goodness. And goodness in itself is a great reward for us. Thank you, Anand ji. That was really useful and helpful to hear from you. इसी डायरेक्शन में सुनील कुमार जी कोची से एक सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि हम इस संदिग्ध मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि what will be the approach of Swaraj Abhiyan about caste operation in the India, and how do you plan to mobilize Dalit Adivasi sections in India? Will you include the visions of Dr. B.R. Ambedkar, Ram Manohar Lohia, and about the equality and fraternity in the political approach? What will be the role of women in the party?
Sunilji, it in is Swaraj a very important consideration because, as I said, Swaraj is a four-dimensional quest: economic, political, but social and individual also. And in social terms, Swaraj will remain incomplete if women are not feeling empowered and emboldened to find their own space and have their own voice and their own role. For the Dalit question, Swaraj Abhiyan belongs to the great tradition of Bhakti movement and national social reformers. So from Vivekanand to Ambedkar and Lohia, we have a great legacy. Their experiments, their heritage is our common resource. And we will be moving forward at all the three levels, that is legislative, educational, and constructive. We are first of all trying to be representative of the diversities of our society in terms of religion, caste, and gender. And you'll be happy to know, Sunil Bhai, that Swaraj Abhiyan has gone far ahead of any existing alternative political organization in terms of creating a network of men, women of all diversities, including religion, region, caste, and class. Our National Working Committee and our National Steering Committee has become a small microcosm of the new India which is on the move. But we have to go further, and as I said, on the question of Aman Committee or Harmony, we are going to take initiatives to have a frontal engagement with sites of caste oppression and communal harassment and intolerance. We need you there because Kerala has both positive and negative to let the rest of the country know you have done remarkable achievements on gender front. But nowadays, you have become the site of communal antagonism. You have done great service to humanity through your engagement on caste. So let us work together and move forward on the Dalit question, on the communal question, and on question of patriarchy and violence against women. Thank you, Anandji. I think this also answers Simran's question from Delhi, and she was asking specifically about Swaraj Abhiyan's take and role in women's safety. I guess we have covered that a little bit. So I will move forward and talk a little bit about on a couple of questions that people have been asking about Swaraj Abhiyan going political or not. So I'll take a question from Pawan Sangwan from Toronto, and he wants to know what is our planning about Punjab in terms of drug problem, religious harmony in light of Guru Granth Bedahi farmer issues, and going forward about Punjab elections. And I will tie this in with another question from Delhi from Roshan, who also wants to know what will be the role of Swaraj Abhiyan in 2017 Delhi MCD elections and also in Punjab Vidhan Sabha elections in 2017. And he wants to know, are we planning to put candidates in these elections? If yes, how Swaraj Abhiyan has built up the organization to move forward? This is a very important challenge because in terms of imperatives for alternative politics, pollution of the election process, electoral corruption, and increasing pressure of black money and muscle power and media power in influencing the electoral processes have been the pain of our democratic system since the days of Jayaprakash Narayan of 1974 fame. Election is perceived as an opportunity for grabbing power, but actually election is an opportunity for demonstrating considerations of the people, concerns of the people, underlining the emerging agenda, and creating a consensus for moving forward for people's betterment. And there the role of voter is more important than role of candidates and the parties. And that role has become diminished, quite marginalized. At the same time, election is a very important process which has to be corrected,
and which has to be engaged. Aam Aadmi Party made us realize that unless we are prepared all the way with the help of voters' engagement, we will be forced to make compromises of very ugly kind. We may win the election, but we'll lose the goal of creating an alternative process of election and government and party competition. So friends, we are being guided by our volunteers in Punjab and in Delhi about what is to be done in 2017. It also includes Uttar Pradesh, Uttarakhand, then of course 2018 and 2019 are not too far away. So we are going to give due consideration, but it has to be proportionate to our organizational capacity, because elections are fought with either organizational power or money power, caste power, communal power. We have to make our choices. If we grow enough, we'll make difference. If we are not organizationally strong, and if we are not known to the people with certain items and agenda, we will be then reduced to our caste and religion in terms of candidates. This has been our experience and will be moving forward. In case of Punjab, we have also been very lucky to have continuous dialogue with noble leaders like Dharamveer Gandhi, Khalsa Ji and others through Punjab unit of Swaraj Abhiyan, which is called Punjab Lahar. We are very proud to inform you that at the Bhog ceremony of two martyrs in Punjab recently, last week, the only two non-Hindus or non-Sikhs at the dais invited and accepted were Dr. Dharamveer Gandhi and Swaraj Abhiyan co-founder Shri Prashant Bhushan. So Punjab is very much at the center of our concerns. In our Shiksha Abhiyan, Shiksha Swaraj Abhiyan, there was a good representation of delegation from Punjab. On drug issue, we are taking it as one of the most serious challenges, as it was pointed out by Professor Yogendra Yadav when he was in his Jai Kisan Yatra, which started from Punjab. So to sum up, 2017, Delhi, Punjab, Uttarakhand, Uttar Pradesh are on our radar. We are very concerned about the drug mafia, which is ruling in a way Punjab and many other parts of the country. And we know that it is part of crime politics nexus, which is supported by electoral victories through black money and communalizing the elections. We have to make the difference, and alternative politics cannot ignore electoral duties, but it has to be in conjunction with our organizational capacity building and our agitations and mobilizations. At the moment, we are known in certain pockets of India as people who mobilize through Jai Kisan Andolan. We are soon going to be recognized because of our work on the front of education, employment, and communal and social harmony. If we go further and become also the vanguard of anti-corruption movement, then we will have capacity to engage the voters beyond the frameworks of caste, region, religion, and money power. Thank you, Anandji. Since we've been undertaking the Shiksha Swaraj and you have been talking about education, here is a question that Ankur is asking on Twitter, and he wants to know whether Swaraj Abhiyan can fulfill the expectation of the young generation who are educated but jobless, or if yes, how can we do that? Ankurji, the question has to be put the other way around. The students and youth power are the only agency who can make the difference, because we have feeling of great betrayal again and again for last 65 years. Unless youth movement of India makes it top agenda. Now you say that okay, we will do it, but what will be the role of Swaraj Abhiyan? Swaraj Abhiyan should be facilitator, catalyzer. इसको माला की धागा बनना है. स्वराज अभियान नौजवानों का आंदोलन नहीं होना चाहिए. नौजवानों के आंदोलन में स्वराज अभियान को खाद का काम करना चाहिए. जो सम्मेलन हमने किया, उसमें जो प्रस्ताव पास किया है, उसको आप ध्यान से देखें, अपने इलाके के साथियों में बातचीत करें.
हमें आप मौका दें, हम आपके बीच में पहुंचेंगे और जो आपकी पहल है, जो आपकी जरूरत है, उसको हमारा पूरा समर्थन रहेगा। अगर आपने ये भरोसा हमारे ऊपर डाला तो इंदिरा गांधी जी के गरीबी हटाओ से लेकर के श्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन आएंगे तक एक के बाद एक धोखा मिला है, इस्तेमाल हुई है युवा शक्ति, उसको राहत नहीं मिली है। अच्छा होगा कि हम इस धारा को पलटें, नौजवानों की सुने, आपकी अगुवाई में आगे चलें। Thank you very much, Anandji. That was really heartening to listen. And of course, participation of the youth is the key to drive Swaraj Abhiyan, as we all understand. एक question थोड़ा अलग हट के है, so I'm going to change gear here a little bit. And सुनील जी दिल्ली से पूछ रहे हैं कि as an organization, should we are we getting enough media attention about our achievements thus far, or we keep working silently for our abhiyan? Should we be striving towards getting the attention? Are we getting enough attention, or is our focus to put our heads down and keep working silently? Sunilji, India is such a huge country that it's never enough. And that's why you know that even the Prime Minister of India and the major parties of India have engaged PR companies, though they get a lot of media attention on a daily basis. So we are getting media attention in a very minimal manner in proportion to what we do visually. So when our leaders get arrested, we are then attended by the media. When we have some controversy, then we are attended by the media. Otherwise, media is also very helpless. You have Radhema, you have Chota Rajan, you have cricket defeat by South Africa. You have too many things happening around the country, and media has only its few minutes for the political and social questions. But yes, at the regional level, you'll be very happy to know that wherever we are taking initiatives, whether it was Jai Kisan Yatra, Shiksha Swaraj initiatives, or communal harmony and anti-corruption engagements, regional media or Indian language media is giving us great space, lot of pictures, lot of reports, lot of interviews. Similarly, social media is being activated with help of Swaraj Abhiyan volunteers. We have very lively debate in social media, and some of us are very thankful to people like you, because our what you call Twitter outreach and our Facebook account reach is increasing on a daily basis. I think nearly 1 million people are covered by some of us together, Yogen, Prashant, Shalini, Adil. Some of them are very active there, and but we do need a better strategy. And of course, we have to beg to the media that look, we are also newsworthy, though we are not doing any dirty politics. Thank you, Anandji. And if you could, I'll follow up on the same lines. Apart from media, what can we, the supporters or sympathizers of Swaraj Abhiyan, do to bring the good work to public? आपने social media एक platform कहा, but do you have more suggestions on how people can participate to get the word out? Yes, you see, there are three things which an ordinary citizen can easily do without disturbing the routine challenges of their life. And one of them is to like us, to attend us, is like saying, hello, how are you doing? How are you today? Your concern makes us go faster. If we don't get feedbacks, positive or negative, then we feel that we have fallen in the zone of indifference. We are being subjected to cultivated negligence. So that is one thing which is very important as an ordinary citizen, that you don't have to always agree with us, you don't have to always disagree with us, but keep us within your range of communication. Second, I think you have to yourself remind your network about certain considerations, certain questions, certain imperatives. What are we doing? How are we behaving? Is it really right way to do things? Meaning that whatever is there on the national agenda, because of the media, because of politicians, because of tragic circumstances or achievements of our country, you as a concerned citizen, as the sovereign of the country, must make your opinion known to the people. Taking position will make us
feel fraternized, that there are other people also thinking same way. Yes, we need election reforms. Today there is election in Bihar. People are waiting for the result tomorrow morning. But nobody has talked about the unbridled use of media power and fathomless use of money power. We are only talking about winning and losing. We are not talking about the rules of the game. So these pollutions, and from the pollution of election to pollution of air quality in Delhi, they are all common agenda, and they should be on the agenda of our consideration also. We should not compartmentalize that it is their job and it is our job. And thirdly, of course, help us now. We have a small fund of 15 lakh rupees after 6 months, and we need to multiply it soon. We also need your input in terms of ideas, your own solutions, your own constructive suggestions about a variety of micro, meso, and macro problems. Don't stop communicating to us, because you are also one of the stakeholders. तो अगर आप ये तीनों काम करेंगे, नंबर एक, हमारे बारे में ध्यान रखें, हमको अपने ध्यान में रखें, रिस्पॉन्ड करें. नंबर दो, खुद भी जिन सवालों के बारे में आपका एक गंभीर भारतीय के नाते, एक गंभीर मनुष्य के नाते सरोकार है, उनको जाहिर करें. और तीसरा, हमारी अब मदद करिए. हम 6 महीने हमने हाथ आगे नहीं बढ़ाया था, क्योंकि हमको खुद नहीं मालूम था कि 6 महीने में हम कहां होंगे. लेकिन आज हम इस भरोसे के साथ आपके साथ जुड़ना चाहते हैं कि ये एक टिकाऊ मंच बन गया है, संगठित है, एकता आधारित है और आगे चल रहा है. थैंक यू आनंद जी. क्योंकि हम बात कर रहे हैं समर्थन के लिए और लोगों की फीडबैक के लिए और विजिलेंस के लिए, तो मैं अगले 2-3 सवाल इस डायरेक्शन में लूंगी. आई वुड से दे आर रिलेटेड टू ग्रीवेंस एंड सम एंजाइटी फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग फ्रॉम सत्येंद्र फ्रॉम पटना, बिहार, एंड वो जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप आम आदमी पार्टी में रह के काफी कुछ कंट्रोल में नहीं रह पाया था, तो कैसे आप विश्वास दिला सकेंगे कि स्वराज अभियान को इन चीजों से परे रख पाएंगे और इन चीजों से हम कंट्रोल कर पाएंगे? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है. इसके लिए हमको पार्टी के अनुभवों को, आम आदमी पार्टी के दुखद अनुभवों को ध्यान में रखना है. आपको याद है कि पार्टी का जो आंदोलन का पक्ष था वो तो नियंत्रित था. आज भी आम आदमी पार्टी के विरोधी भी नहीं कहते कि आम आदमी पार्टी ने हिंसा किया, अराजकता किया, लूटमार की, दबंगई की. नहीं, हमने आंदोलन तो नियंत्रित रखा, जनतांत्रिक रखा. चुनाव के प्रचार में भी हमने पहला प्रचार लोकसभा तक आने आते दूसरा प्रचार आदर्श तरीके से किया, जिसमें हमको हारने की कीमत पर चुनाव की सफाई करने का काम करना पड़ा. हाँ, दिल्ली के चुनाव में सारी लुटिया डुबो दी गई. तो अब हम ऐसा करेंगे कि हार और जीत के बारे में वॉलंटियर को तैयार रखेंगे. जीत और हार के आगे की जो देश की जरूरतें हैं उसकी तरफ राजनीति को मोड़ेंगे, और स्वराज अभियान को शुरू से एक संवाद करने वाला परिवार बना के रखेंगे. ग्रीवांस सेल को हम एक्टिव रखेंगे, डिसिप्लिन कमेटी को हम एक्टिव रखेंगे, लोकपाल को हम, जब तक वो हमारे मन की बात करे तब तक तो उनको सम्मान दें, और जब वो हमारी मर्जी के खिलाफ लिखने पढ़ने लिखें तो कहें कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है. ऐसा नहीं करेंगे. तो अगर ऐसा हमने किया, इंटरैक्टिव ऑर्गेनाइजेशन रखा, नॉन एरोगेंट लीडरशिप रखी और अकाउंटेबल यूनिट्स को बना के रखा, तो नियंत्रण की समस्या नहीं रहेगी. लेकिन रोज रोज जैसे हम घर की सफाई करते हैं, मंदिर तक की सफाई करते हैं, मस्जिद की सफाई करते हैं, अस्पताल की सफाई करते हैं, वैसे संगठन की भी सफाई नियमित करते रहना है. और इसमें जो संगठन के अंदर है उनकी तो जिम्मेदारी है ही, हमारे जो आलोचक हैं उनकी भी सेवाएं लेंगे, जिससे कि हमारे संगठन में कहीं भी कोई भी थोड़ी भी खराबी आने लगे, कहीं व्यक्ति पूजा बढ़ने लगे, कहीं अहंकार बढ़ने लगे, कहीं गुटबंदी होने लगे, कहीं नाइंसाफी होने लगे, तो उसको हम दूर करें, उसको छिपाएं नहीं. थैंक यू आनंद जी. इस डायरेक्शन में कुछ सिमिलर सवाल हैं कृतिका न्यू जर्सी से,
राज लंदन से, विघ्नेश चेन्नई से। तो मैं इन्हें थोड़ा ब्रेक करके आपको पढ़ के सुनाऊंगी। ये जानना चाहते हैं कि इनका सोच ये है कि शायद कहीं हम वही गलतियां तो नहीं कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी में कर रहे थे। जिस तरीके से अभी स्वराज अभियान 6 महीने का ही है, मगर इसके ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे यदि आप कुछ कमेंट कर सकें कि क्या टास्क ग्रुप्स ओरिएंटेड है, क्या लीडर्स इस बारे में वाकिफ हैं कि आर दे एबल टू गिव ड्यू अटेंशन टू बिल्डिंग द फ्रेमवर्क ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एंड there are committees that have been formed, and what is the plan to bring about updates? For example, the constitution was brought in and there were amendments that were suggested, lekin the updates have not been made public yet, and some of these supporters feel that they fear that Swaraj Abhiyan is moving towards a plateau of previous efforts. And what would you tell us about having a good grievance committee, whether the grievances are in the knowledge of the Swaraj Abhiyan leaders, and what can be done to that front, especially when it comes to building a very strong organization and getting these committees rolling? Thank you. I think it makes me feel that it is really a global dialogue. New Jersey, London, Chennai. Let me remain in English language for the communication so that we are reaching out to the concerned friends in a meaningful manner. First of all, what was the tragedy with Aam Aadmi Party? And we all say unanimously that it became a personality-centered party with a supremo syndrome. So we decided to decenter the role of convener, and you'll find me behaving more like Queen of England or President of India rather than a supremo. In the last 6 months, this is my second communication with you through Swaraj Abhiyan channels, and I have been avoiding media engagements because our media work has to be done by media person, not the convener. And it is not necessary that the story begins with convener and ends with convener. Secondly, Swaraj Abhiyan took lessons from Aam Aadmi Party tragedy, and we made our national working committee a real interactive body. So in last 6 months, it has met 6 times every month. And last week we had the workshop of National Working Committee about some of the proposed constitutional amendments. Constitutional amendments are supposed to be handled by National Steering Committee, and you'll be very happy to know that our National Steering Committee, which has to meet twice in a year, is going to have its second meeting within 6 months towards the end of November to consider some of the proposed constitutional amendments. We have made certain committees which are rolling out. One of them is the committee about our policy perspective document, and the new agenda for India document is now available online in Hindi and English for further discussion and brainstorming, and that committee has become slightly enlarged also with new resource persons added. Similarly, our organizational work is being fine-tuned through our core group, which has been working in consultation with our General Secretary Dr. Ajit Jha, Fahim Khan, and Shalini Gupta. We have also a network committee, or you can say network group, which is more like social media group, which has created persons which are reaching out to the rest of the community through internet, and Rajji is coordinating from London. We have Neerajji, we have Shalini Malviya, and as it is a growing team, there are certain hiccups, and of course with help of each other in a constructive manner, we have been able to handle that. We have created 15 state campaign committees, which are created out of the state level dialogues, which is a major breakthrough beyond the Aam Aadmi Party, which had become so Delhi centric that everybody else was feeling out of depth and unwanted. We have also created a network of
communication through personal outreach, in the sense that we are all approachable. We are going to places, to small and big conferences and meetings. We are receiving friends. We are communicating through email, internet, and personal communication. Then finance-wise, Aam Aadmi Party was a big disaster because there was no transparency about sources of funding in the later part, particularly election period, Delhi Vidhan Sabha, which was a reason of crisis, and there is really no detail about expenses. So we have created a very sophisticated system of input-output, and we have put our unaudited details of sources of our income, which is in the neighborhood of around 15 lakhs, and we have savings of 15 lakhs, so 30 lakhs total, and we have also expenses. Major expenditure was about rural mobilization, Jai Kisan Andolan. We have put in some money for Shiksha, that is educational front engagement. We have put in some money for our central and state office system. In Delhi, you'll be very pleased when you visit next time that there is a functioning central headquarters at the outskirts of Delhi in Noida, and there is a team working there in a very, with simple resources but very effective communication system. So, Aam Aadmi Party gave us some lessons about failures, and those failures have become building block for our present level of satisfactory growth. Yes, we should move faster because the time is running out. There is a time deficit so far as making India a corruption-free nation is concerned. At the same time, we have to have some time at our disposal for gelling together. I'm very happy to report to you that there are very few complaints to the grievance committee in the last 6 months. And at the same time, we are very happy to inform you that some of the very respected public figures have agreed to be our Lokpal and our discipline committee persons. These announcements are to be made in our National Steering Committee in 3 more weeks. Just wait for the good news, but be confident that we are vigilant because we have been hurt. All of us are individually hurt. We have been humiliated because of some of our lapses. So if you don't want to be hurt again, be vigilant, be careful. Thank you, Anandji. That's very nice to hear coming from a national convener so openly about being vigilant. And we are coming to the close of our hangout now. Or Ant mein, there are several questions in this direction, and I will word it for all our viewers. One is, what is the plan of Swaraj Abhiyan? Will it enter mainstream politics sometime? When? And the other question is a more generic one, कि स्वराज अभियान आगे किस दिशा में ले जाना है? Perhaps you can add your closing remarks with these questions too. Very helpful. I'm very happy that last 50 minutes gave me enough to tell you about the state of art situation. Now, are you there in the mainstream politics? You'll be very happy to see us responding and sometimes making others respond from the so-called mainstream politics. What is mainstream politics? People who are in parties which have effective presence in assembly, parliament, and in the governance of the country, right? So we are taking on the state governments, central government, and district governments in a very effective manner. Very recently, the Chief Minister of Uttar Pradesh felt compelled to invite our Jai Kisan Abhiyan convener, Professor Yogendra Yadav, and gave a very respectful opportunity with his cabinet and his secretariat to understand our perspective about what to do with famine-like condition in Bundelkhand. Maharashtra Chief Minister responded to our letter by declaring parts of Maharashtra as drought-affected area. Similarly, the movements which are there in the country, from Medha Patkar's Narmada Bachao Andolan to One Rank, One Pension movement, they are in continuous dialogue with us. They value our position, they value our support. Very recently, an anti-corruption engineer was killed, Saurabh, in
West Bengal, and that campaign by the colleagues and alumni of Saurabh's institution. They invited us just last week. The students of India are fighting back to save their scholarship, and this non-net scholarship protection movement invited us, and we took out one of our first major rallies in the capital of India in support of our students. So this is where we are in terms of agenda of the mainstream politics, and we are engaged in very effective manner. But yes, elections, assembly, parliament, and governance, we are quite far from there, and we have to do our own homework, which we are going to decide about our agenda, our initiatives, our responsibilities when we meet in the last week of November with other members of the National Steering Committee. Secondly, what is the future direction? Obviously, alternative politics is not partyless democracy politics. Alternative politics is not politics without engagement with election. Politics has got four facets. One is conscientization, the other is mobilization, third is election, fourth is governance. All four put together in an alternative frame will make the total story of alternative politics. We are not for a society which has no responsible citizenship duties. So we have to start from citizenship duties and go up to serious challengers in the election system. But election has become the beginning and the end of all political processes these days. We want to make it a secondary form of politics. Just like somebody said that writing is secondary form of protest, for us, election should be secondary form of politics. Primary form of politics is empowering the people, partnership with the people from day-to-day life to national scene. And this is where our effort of Swaraj Kendra, Jai Kisan Andolan, Shiksha Swaraj, Anti-Corruption Forum, and Aman Committee are on the agenda. The day is not far when you will find us appealing for funds for elections, for funds for volunteers, for funds for our publications. But this all has to be in harmony with natural growth process. We cannot artificially press Swaraj Abhiyan into electoral competition because it will be mutilating us. It will be creating confusion. We cannot allow others to decide our terms of engagement for alternative politics. We have to decide our own priorities and give us 4 more weeks. Hopefully, in December, we'll have another hangout where we will report to you the considered opinion and decisions of the National Steering Committee in terms of what next. Thank you, Anandji. And thank you everyone for joining us in the Hangout today. I hope we have been able to answer most of the questions. और हम चाहेंगे कि ये संवाद जारी रहे आपके साथ. Please keep contacting us. Our email ID is contact@swarajabhiyan.org. Please visit us on www.swarajabhiyan.org and find information there. Until we meet again, keep the dialogue going, keep your questions coming. Jai Hind, Namaskar. Thank you so much.